RNA which has been formed, it comes out, guys, it is coming out in the cytoplasm, and now it will help in the protein, or it will act as a guiding principle or the guiding source for making of proteins, and these proteins will carry out all the various functions of the body. Okay, so now this process of making of proteins, reading the information present in RNA and converting it into the language of proteins is known as translation. And we studied that there are many things required for the process of translation. Only mRNA is not sufficient. This mRNA is again assisted by two more types of RNA. So that means all three types of RNA are together helping in protein synthesis. The second type of RNA is the ribosomal RNA, the rRNA as it is called. So this ribosomal RNA is helping along with the proteins are making up the ribosomes. And we know that ribosomes are the protein factories. Oh my God, Shikhar, it's so hot and you're wearing this cap inside the house? No problem, looking good. Okay, so we were talking about the process of translation. rRNA, we have understood, it forms a part of the ribosomes, and these ribosomes are also known as the protein factories. Okay, then is transfer RNA. We studied the clover leaf structure of transfer RNA. It has got some special types of nitrogenous bases present in them, like pseudouridine, etc., which makes it a specific type of a structure. And the foldings are two-dimensional. State is clover leaf-like, and the three-dimensional state is L-shaped. Okay, we have studied about the various arms, the four arms of the tRNA, out of which the two arms are very, very important, but ones which are opposite to one another. First is the anticodon arm, which has got the codon sequence, which has got 3 nucleotides, and this anticodon arm has the ability to temporarily form a bond. A temporary bond can be formed with the mRNA. Okay, so it can form a temporary bond with the codons present on the mRNA. That is why we call it as the anticodon arm. Okay, and just opposite to the anticodon arm, we have the amino acyl end. That is the 3' end, and this 3' end has the ability to bind the amino acid. Okay, so amino acids, they are bound to the 3' end, and they bring the amino acid to the side of protein synthesis. That is why they are known as transfer RNA. Okay, so these are all the things that are required for the formation of the proteins. Now let's see what happens when the mRNA, the functional mRNA, after disguising, after splicing, comes out into the cytoplasm. When it comes out on the cytoplasm, then what happens? The ribosomes, they bind to this mRNA. Either one ribosome can bind, sometimes many ribosomes can bind, and a polyribosome is formed and giving a beaded-like structure. So at various locations, the protein synthesis can start. Okay, so first let's talk about these ribosomes. Ribosomes, we know they are made up of two subunits, one small subunit and one large subunit. Okay, so when we talk about these subunits generally remain detached from one another. Small subunit remains separate from large subunit. When protein synthesis has to take place, only these two subunits combine together, and they together help in the formation of proteins. Okay, so the first subunit which attaches to the mRNA is the small subunit. So first the small subunit attaches to the protein है, mRNA है, mRNA के साथ पहले small subunit attach करेगी, and then the large subunit will come on the top and trap the small subunit. Okay, so this is how it will get surrounded. The mRNA will get surrounded by the ribosomes. Okay, and then this phenomena, joining together of these two ribosomal subunits, is known as association, and for the ions are very, very essential. So that is why magnesium ions are also important for protein synthesis. Okay, because the two subunits cannot come together without the process of association, and process of association requires magnesium ions. Okay, then is there are different parts of the ribosome which connect to the protein, which have entry tunnel and an exit tunnel present in the ribosomes. Then this entry and exit tunnel is present on the larger subunit. Let's study about the active sites on a ribosome, and then we'll proceed further.
When we talk about ribosomes, there are three active sites present in the ribosomes. Okay, and these three sites are known as site. I repeat, these three sites present in the ribosomes are known as the P site. P site is also known as the peptidal transferase site or donor site. क्योंकि उसका नाम donor site है, that is why some books do not call it the P site, they also call it the D for Delhi site. Okay, D site. So P site and D site एक ही बात है. And P site का काम क्या है? It is also known as the peptidal transferase site. The second site, why A site? Because it is the acceptor site और इसको हम amino acyl site भी कहते हैं. A for acceptor या A for amino acyl site is the second site. The third site is the E site. E for exit. Okay, so E is the exit site, and these three sites are present on the large subunit of the ribosome. Okay, so अब एक process देखते हैं how protein synthesis is taking place. So if suppose the protein synthesis has to take place, so what will happen? Okay, so if this is an mRNA, then what attaches to this mRNA? First of all, the small subunit attaches to this mRNA, and then the large ribosomal subunit attaches to the mRNA. Okay, and this large subunit, I hope it is clearer now. Okay. This large subunit has got three sites. These three sites are known as, first is the A site. The A site, the P site, and the E site. Okay, the acceptor site, the peptidal transferase site, and the exit site. Now, what these sites actually हैं क्या? These sites are corresponding to three different codons. Okay, so acceptor site is the site where a transfer RNA will come, bringing an amino acid. A new transfer RNA will enter into the ribosome as at the acceptor site. Okay? Once it comes to the acceptor site, then what happens? The ribosome shifts by one codon. एक codon आगे shift हो जाता है ribosome. Now जैसे ही ribosome shift हुआ, let's show the shifting of this ribosome. अगर ribosome यहाँ से यहाँ shift हो गया, so what will happen? जो पुरानी P site थी will now become the E site. पुरानी A site will become P site. ठीक है, तो slowly and gradually जैसे जैसे राइबोसोम शिफ्ट होता जाता है, mRNA site keeps coming inside. The old A site becomes the P site. और अब क्या होगा? Now why is this thing happening? ये इस तरीके से process हो क्यों रहा है? Let us see. सबसे पहले, if there is an mRNA here, mRNA पर small subunit attach किया, large subunit ने attach किया. Ultimately, all these things, why is this occurring? This is occurring so that protein synthesis can take place. तो हर एक राइबोसोम के अंदर, लार्ज सबयूनिट के अंदर तीन साइट्स थी. ए साइट पर एक टीआरएनए आया, उसने यहाँ पर आकर के अटैच करा और अटैच करके अपना अमीनो एसिड यहाँ पर दे दिया. यहाँ पर अटैच हो गया वो टेम्पररी एसिड. एक नया अमीनो टीआरएनए कैन एंटर ओनली फ्रॉम द ए साइट. सिर्फ ए साइट ही इज द साइट जहां से एक नया टीआरएनए आ सकता है. अब जब तक नया टीआरएनए नहीं आएगा तब तक आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. तो अब क्या होगा? तो जैसे ही इसने शिफ्ट किया, ये पी ए और एक नई ए साइट आई. एक नई ए साइट के लिए एक नया टीआरएनए आया.
जैसे ही एक नया टीआरएनए आया, इट बाइंड्स हियर, ओके, ए साइड पे एक नया टीआरएनए, पुराना टीआरएनए पी साइड पे शिफ्ट हो गया और इन दोनों के बीच में बन गया एक पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, क्या हुआ, अगेन जो विद द स्मॉल यूनिट भी साथ में शिफ्ट होती है। नाउ दिस बिकम्स द ए साइड, दिस बिकम्स द पी साइड एंड दिस बिकम्स द ई साइड। ई मतलब एग्जिट। अब ये जो है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना था बिकॉज and this tRNA will exit empty, unloaded tRNA will move out of the ribosome from the exit side. So in brief क्या हो रहा है, new loaded tRNA is coming at the A side. A side पे आते ही P साइड और A साइड के बीच में जो अमीनो एसिड्स हैं इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही it shifts by one codon, and when it shifts by one codon, the unloaded tRNA moves to the E side and then it is the protein synthesis goes on taking place जब तक कि यहाँ पे क्या नहीं आ जाता, यहाँ पर UAA यानी कि स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। ओके, यहाँ पे सबसे पहला अमीनो एसिड जो ऐड होगा, एसिड्स विल गो ऑन एडिंग जब तक कि स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। बिकॉज फॉर stop codon, I have told you that the benefit of stop codon is कि there is no tRNA present for stop codon. Stop codon के लिए कोई भी tRNA is not present. और अगर कोई tRNA present ही नहीं है तो जब stop codon पर आया राइबोसोम तो nothing will be there. No tRNA will come. When tRNA will not come, तो जितने भी प्रोपेप्टाइड बॉन्ड से अभी तक प्रोटीन बना है वो रिलीज हो जाएगा, राइबोसोम्स रिलीज हो जाएंगे एंड प्रोटीन सिंथेसिस विल कम टू अ halt. Okay, so list the slides that how protein synthesis is taking place. Just give me a minute. I'll just share my slides with you. Ma'am, okay. And molecular basis of inheritance, we were talking about translation. So what happens in case of translation? सबसे पहले the ribosomes bind to the specific translation sites messenger RNA. Okay, I told you कि कई सारे ribosomes एक साथ अलग-अलग messenger mRNA पर अलग-अलग sites पर attach हो सकते हैं, which gives a beaded appearance, polyribosomal appearance. Okay, we call it as the polyribosome. Now, the modified amino acid N-formyl methionine is always the first amino acid for the new polypeptide, क्योंकि AUG is the start codon. तो जहाँ पे starting होगी वहाँ पे सबसे पहले N-formyl methionine will be added. Eukaryotes के केस में the ribosome bind to the 5' cap and then move down the mRNA. Move down, I told you ना, mRNA के आगे move करता जाता है. And then what happens? Until they reach the first AUG, the codon for methionine, वो खाली move करता चला जाएगा जब तक कि AUG नहीं आ जाता। तो AUG से पहले के जो सीक्वेंसेस हैं उनके लिए कोई भी अमीनो एसिड ऐड नहीं होगा। अमीनो एसिड ऐड होना कब से स्टार्ट होंगे? जब P साइट पर AUG कोडॉन आ जाएगा mRNA का। ओके, ट्रांसलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. Eukaryotic mRNAs code for single genes, although there are few exceptions, mainly among the eukaryotic viruses. So in case of prokaryotes, एक ही gene जो है, it can code for many proteins. Different parts of the gene can code for many proteins. Whereas here, yes. मैम अगर AUG आया ही नहीं तो? AUG आया नहीं तो initiation होगा ही नहीं. No protein synthesis will take place because that is the start codon. Okay, so if AUG is not present, कोई भी genetic mutation हो गया जिसकी वजह से AUG वहां से remove हो गया या AUG आया ही नहीं, that mRNA will not be expressed. That mRNA will not help in the formation of protein. ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा, अपने आप थोड़े टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा. ओके, सो द ट्रांसलेशन डज नॉट स्टार्ट एट द फर्स्ट बेस ऑफ mRNA. जरूरी नहीं है, अगर फर्स्ट बेस जो है वो AUG, फर्स्ट कोडॉन AUG नहीं है तो जरूरी नहीं है कि mRNA यहाँ से शुरू हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यहीं से उसका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा. कहाँ से स्टार्ट होगा? डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्टार्ट कोडॉन. ओके, there is an untranslated region at the present
present at the beginning of mRNA, which is called as the 5' untranslated region. कुछ पोर्शन AUG से पहले mRNA का प्रेजेंट होता है, और क्योंकि वो AUG से पहले प्रेजेंट है, it will not be lead to protein synthesis. That is why we call it the untranslated region. Translation मतलब protein formation में जो help कर रहा है. Okay. Then is initiation. The initiation process involves first the joining of mRNA, the initiator methionine tRNA, and the small ribosomal subunit. See, यहाँ पर this is the small ribosomal subunit and this is the messenger RNA. ठीक है, mRNA यहाँ पर आकर के small subunit से अटैच हो गया, और यहाँ पर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में बाइंडिंग को स्टेबलाइज किसने किया? इस जो S यूनिट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है उसने इस बाइंडिंग को पॉज किया, एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया विद दिस एमआरएनए है, तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो स्मॉल बॉन्ड कॉज कर लेता है जिससे एमआरएनए यहाँ पर रुका रहे, अदरवाइज जैसे ही वो पास में आया फिर वो अलग सेपरेट हो सकता है. So to hold the mRNA in its place, a temporary binding is formed between this mRNA and the rRNA present inside the small ribosomal subunit. ठीक है? Then several initiation factors, additional proteins are also involved. तो साथ ही साथ कई सारे प्रोटीन जिनको हम initiation factors कहते हैं, they also help in this binding and the process of initiation. एक बार इन दोनों के बीच में binding हो गई किसमें? mRNA which is coming from the nucleus and the small subunit of ribosome. Then the large subunit comes and attaches. और इसके लिए magnesium ions का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for this association. Now, when this large subunit comes and attaches to the small subunit और बीच में क्या आ गया? mRNA. We see that this large subunit has got 3 sites. The one I was telling you on the board about. A site, acceptor site. P side, the peptidyl transferase site, and the E side, that is the exit side. ठीक है, और यहाँ पे देखो P side के नीचे कोडॉन कौन सा आ रहा है? Always, this is the beauty of nature. P side पर कौन सा कोडॉन अपने आप को एसोसिएट कर लेता है? सबसे पहला AUG. उससे पहले का ये नॉन ट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, इनके अगेंस्ट नहीं बनेगा कोई भी प्रोटीन. ठीक है, AUG अटैचेस टू द P साइड, और जैसे ही AUG P साइड पर अटैच होता है, राइबोसोमल यूनिट कंप्लीट होती है, एक tRNA आता है और अपने साथ क्या लेकर आएगा? मिथायोनिन. यहाँ पर आकर के ये tRNA will bind to this AUG. ये वाला एंड क्या है? दिस इज द एंटीकोडॉन आर्म, बिकॉज इट्स सीक्वेंस इज opposite to the sequence of the codons present on mRNA. ये AUG है तो ये UAC होगा, ओके, और it will get methionine. तो methionine यहाँ करके bind करके आप देखते हैं आगे क्या होता है. Next step is elongation. The ribosome has 2 sites for tRNA called the P site and A site. The initial tRNA with attached ribosome is the P site. A new tRNA corresponds to the next codon on the mRNA, binds to the A site. Okay. See here. सबसे पहले P साइड पे मिथायोनिन आया, मिथायोनिन आने के बाद जो A साइड वाला कोडॉन था उसको रीड किया और उसके अगेंस्ट एक tRNA, उसके इस कोडॉन को जो कोड कर रहा है अमीनो एसिड को, वो अमीनो एसिड लेकर एक सेकंड tRNA यहाँ A साइड पर अटैच कर जाएगा. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? सी हियर, मिथायोनिन और इस सेकंड अमीनो एसिड के बीच में, कैन यू सी दिस डैश बीइंग डेवलप्ड? एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है. A peptide bond is formed, और जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, what happens? The whole ribosomal subunit, large and the small ribosomal subunit, shifts by one codon. ठीक है, mRNA अपनी जगह पर है, राइबोसोम आगे शिफ्ट हो गया, और कितने स्पेसेस आगे शिफ्ट हुआ? सिर्फ 1 कोडॉन आगे शिफ्ट हुआ. बिकॉज ऑफ दिस, जो अर्लियर A साइट थी अब वो आ गई P साइट पर, जो अर्लियर P साइट थी वो आ गई E साइट पर, और एक एम्प्टी A साइट इज क्रिएटेड, और इस एम्प्टी A साइट के नीचे एक नया कोडॉन इनकॉर्पोरेट हो जाता है. ठीक है, E साइट मतलब एग्जिट साइट. अब ये tRNA तो अनलोड हो गया ना, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड के बाद ये दोनों आपस में अटैच हो गए टू द न्यू tRNA. दिस बिकम्स अनलोडेड, और अनलोडेड tRNA मूव्स आउट फ्रॉम द E साइट. ठीक है, आगे और कैसे कंटिन्यू होगा? अब नई A साइट क्रिएट हो गई थी, तो नई A साइट पे एक नया tRNA आएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, अगेन राइबोसोम एक कोडॉन शिफ्ट होगा, E साइट पर आ जाएगा नाउ एम्प्टी tRNA एंड विल गो आउट.
ऐसे होता चला जाता है, होता चला जाता है। कब तक होता है ये प्रोसेस? जब तक कि ए साइट के ऊपर कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। अगर कोई स्टॉप कोडॉन आ जाए, यहाँ आरएनए का स्टॉप कोडॉन ए साइट पर आ गया, तो अब उसके अगेंस्ट कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा। कोई टीआरएनए नहीं आया तो इसका क्या मतलब होगा? अगेन ई साइट से टीआरएनए सेपरेट हो जाएगा, प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे, राइबोसोम्स, एमआरएनए सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेगा और जाकर के अपना फंक्शन कैरी आउट कर देगा, व्हिच इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन। ओके, लेट अस सी व्हाट वाज हियर। elongation में क्या होता है? The ribosomes move down one codon. Now the empty tRNA at the P site is displaced off from the ribosome, क्योंकि अब वो आ गया E site पर। E site is the only point from where the tRNA can leave the ribosome. Leaving वाली site पर आया, exit हो गया, and the tRNA that has the growing peptide chain is moved to the from the A site to the P site. ठीक है, A site वापस खाली हो गई, वहां पे एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा। ओके, this process is repeated, repeat होता रहता है this process. The tRNA and the P site holds the peptide chain, or new tRNA binds to the A site, and this way राइबोसोम एक एक कोडॉन शिफ्ट होता चला हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होती जाएगी। नाउ व्हाट, हाउ टर्मिनेशन टेक्स प्लेस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। लेट्स सी हाउ टर्मिनेशन इज टेकिंग प्लेस। द 3 कोडॉन्स आर कॉल्ड एज द स्टॉप कोडॉन्स। दे कोड फॉर नो अमीनो एसिड। कोई टीआरएनए नहीं होता उनके लिए, कोई अमीनो एसिड नहीं होता उनके लिए। सो they code for no amino acid, and all the protein coding regions end in a stop codon. When the ribosome reaches a stop codon, A site पर जैसे ही stop codon आ गया, what will happen? There is no tRNA that binds to it. Instead, proteins called release factors, ये पिंक कलर में उन्होंने क्या दिखाया है? कोई tRNA ना आकर के, उसकी बजाय release factors आकर के यहाँ पर attach कर जाते हैं। Okay? Causing the ribosome, mRNA and new polypeptide to separate. जैसे ही release factors यहाँ पर आए, वैसे ही they cause the changes in the structure in such a way कि proteins, tRNA, ribosomes, mRNA सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सबके बीच का bond break हो जाता है, सब एक दूसरे से release हो जाते हैं, and the new polypeptide synthesis is completed. Note that the mRNA continues on the past stop codon. The remaining portion is not translated. धीरे धीरे करके उसके पीछे भी यहाँ पे स्टॉप कोडॉन यूजीए आया, लेकिन इसके बाद भी एमआरएनए बचा हुआ था, बट दैट विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसलेशन होगा? फ्रॉम द स्टार्ट कोडॉन टू द स्टॉप कोडॉन। चाहे स्टार्ट कोडॉन से पहले कितने भी सीक्वेंसेस हो, अगर उनमें कोई स्टार्ट कोडॉन नहीं है तो वो ट्रांसलेट नहीं होंगे, और स्टॉप कोडॉन के बाद जो भी सीक्वेंसेस होंगे, जब तक कि अगर कोई नया स्टार्ट कोडॉन नहीं आ जाता, विच इज जनरली नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा नहीं होता नेचर में, तो वहां उसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है नेचर का कंट्रोल करना कि क्या प्रोटीन बनेगा। नेचर कंट्रोल्स कि सिर्फ स्टार्ट से स्टॉप कोडॉन के बीच की ही सीक्वेंसेस अपने आप को एक्सप्रेस करें, so that उतने ही अमीनो एसिड ज्वाइन करें और एक प्रॉपर प्रोटीन इज फॉर्म व्हिच कैरीज आउट द राइट काइंड ऑफ अ फंक्शन। ओके, so this is initiation, elongation and termination in the process of translation. Any doubts in this? Post translational modification, अभी तो हमने कहा था कि अगर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इवन आफ्टर द प्रोटीन्स आर फॉर्म, प्रोटीन्स में भी थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था गोल्गी अपरेटस, इनका क्या काम होता है? मॉडिफिकेशंस और कन्वर्टिंग सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब कि ER से बनने के बाद प्रोटीन्स कैन गो टू द गोल्गी अपरेटस और उनमें चेंजेस, groups can be added and the nature of the proteins can be changed to some extent. इन्हीं को हम post translational modifications कहते हैं। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन्स का बनना, and after the proteins are formed, what changes are taking place. New polypeptide usually fold themselves spontaneously into their active conformation. जब तक कि 3D structure intact नहीं होगा, proteins functional नहीं बनेंगे। Okay? However, some proteins are helped and guided in the protein process by the chaperone proteins. तो अगर chaperone proteins जब तक नहीं present होंगे, इन proteins की folding नहीं होगी और वो activate नहीं होंगे, मतलब inactive form में वो पड़े रहेंगे। जब उनको activate करना होगा, chaperone proteins उनको जाएंगे, उनको एक
स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप में फोल्ड करेंगे और अब ये एक्टिवेट होकर के अपना काम कर पाएंगे. ओके, मेनी प्रोटीन्स हैव शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स, fatty acids and other molecules covalently attached to certain amino acid. हम अपने प्रोटीन के फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की भी बात करें तो उसके प्रोटीन पे भी तो ओलिगोसैकेराइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, इट इज नॉट ओनली प्योर प्रोटीन. तो इसका मतलब कई प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए certain groups are to be added. Most of this is done in the endoplasmic reticulum and also in the Golgi apparatus. Many proteins are targeted to specific organelles within the cell. Targeting is accomplished through signal sequences on a polypeptide. In case of proteins that go into the endoplasmic reticulum, the signal sequence is a group of amino acid at the end terminal of the polypeptide, which are removed from the final protein after translation. Okay, so अब कौन से प्रोटीन को किस ऑर्गेनली में जाना है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. प्रोटीन एक बार बना तो जिस ऑर्गेनली में जाके उसको अपना काम करना है, सेल के अंदर की बात करें ना, सेल में ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, इट विल बी सेंट टू दैट ऑर्गेनलीज. और ये कहाँ पे उस ऑर्गेनली, कौन सी ऑर्गेनली में जाएगा, इट इज कोडेड फॉर बाय द इनिशियल साइट्स ऑफ द प्रोटीन, जिसको हम एन टर्मिनस भी कहते हैं. ओके, रिमेंबर एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस. यहाँ पे आया है ये वर्ड एन टर्मिनस. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू. जब हमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स करा था तो आई टोल्ड यू कि प्रोटीन्स में एक होता है एन टर्मिनस और एक होता है सी टर्मिनस. व्हाट इज दैट एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस? ओके, कौन बताएगा एन टर्मिनस क्या होता है, सी टर्मिनस क्या होता है? टेल मी बच्चे. Protein is made up of amino acids. Amino acids are joined together by peptide bond. Peptide bond takes place between the amino group and the carboxyl group. Remember, जिस amino acid का amino group free है, it is not participating in any peptide bond formation. उसको हम कहते हैं N terminus of the protein. And the amino acid present in the protein whose carboxyl group is free. कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना शुरू या एंड वाला, जिसका या तो अमीनो ग्रुप फ्री होगा, जिसने कोई पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा. Okay, so the reading of the protein is done from the N terminus, that is the place where the amino group is free, to the C terminus, that is the place where the carboxyl group is free. जैसे कि हम DNA का ओरिएंटेशन कहते हैं 3' to 5' या 5' to 3'. प्रोटीन्स के लिए हम यूज करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट एट द एन टर्मिनस टेल्स दिस इंफॉर्मेशन कि किस ऑर्गेनली में जाएगा. एंड जनरली आफ्टर कन्वेइंग दिस इंफॉर्मेशन वंस द बिफोर द फाइनल प्रोटीन इज मेड, इन ग्रुप्स को, इन अमीनो एसिड्स को रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज इन अमीनो एसिड्स का सिर्फ ये काम है बताना कि वेयर द प्रोटीन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड. Okay, so this is the post translational modifications. उनमें कुछ ग्रुप्स का ऐड हो जाना, उनका एक 3D शेप में चेंज हो जाना, या फिर उनमें उन अमीनो एसिड एक बार they are transported to the organelles, respective organelles, the amino acids, some amino acid present at the N terminus are removed because their function was only to tell in which organelle they have to go. तो ये भी एक तरीके का modification हो गया. Amino acids cut off हो गए, remove हो गए, and then the protein is folded into a 3D structure. Okay, so this was translation. Any doubts in translation? These things are very very important. Translation, I mean translation के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? Translation के लिए हमें we need the amino acids, we need tRNA, we need mRNA, we need the rRNA, and we need many initiation factors and the release factors. Okay, now let us study कि हम उनको कैसे कैसे steps में study कर सकते हैं translation को, as we have done here. यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे they started with initiation, elongation and termination. Ideally translation should be divided into many steps, and these steps are around 5 steps. The first step in the process of translation is activation of amino acid. जब तक amino acids activate नहीं होंगे तब तक वो site of protein synthesis पर नहीं जाएंगे, and they will not bring about protein synthesis. So what do we mean by activation of amino acids? There is an enzyme, there's a complex which is formed. The
In the presence of ATP, what happens? The amino acid combines to an enzyme which is known as amino acyl tRNA synthetase enzyme. Okay, amino acid combines to amino acyl tRNA synthetase enzyme, which forms the amino acyl adenylate enzyme complex, or this complex is later used for making the peptide bond. Okay, this complex goes to the site of tRNA and provides the amino acid for protein synthesis. So I repeat, amino acid का amino acyl tRNA synthetase के साथ enzyme के साथ combine करके amino acyl adenylate enzyme complex का बनाना is known as activation of amino acid. और इस activation में भी again magnesium ions are highly required. Okay, then second is चार्जिंग और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए. अभी अमीनो एसिड अकेले तो जाके प्रोटीन सिंथेसिस कर नहीं सकते हैं. इन अमीनो एसिड्स को कहां पे जाके अटैच करना है? दे विल गो एंड अटैच टू टीआरएनए, और टीआरएनए इनको लेकर के जाएगा टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो नेक्स्ट स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए. अमीनो एसिड्स का टीआरएनए से जुड़ना is called as charging or amino acylation of tRNA. Okay, now what happens? The amino acyl tRNA complex, जो amino acyl enzyme complex था, it comes, attaches to the tRNA, and then the energy ATPs जो है वो release होते हैं, energy is released, and the binding between amino acid and tRNA takes place. So again, what happens? The amino acyl adenylate enzyme complex combines with tRNA, then energy is used by ATP, and this energy causes the bond formation between tRNA and amino acid, और ये खाली enzyme complex is removed. Enzyme अपने साथ amino acid को bind करके लाई, amino acid enzyme complex ने tRNA से bind करा. Suppose this was the amino acid and this was the enzyme. Enzyme ने इसको bind किया, activation of amino acid. अब इन दोनों ने आकर के टीआरएनए से अटैच किया. टीआरएनए से अटैच करने के बाद क्या हुआ? ये एंजाइम रिमूव हो गई. अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एंड द एंजाइम इज रिमूव. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस. देन इसके बाद इनिशिएशन. वी हैव स्टडीड अबाउट इनिशिएशन. देयर आर नंबर ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स जो आते हैं एमआरएनए स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट के बीच में bond formation cause कराते हैं, and then the large subunit comes and attaches to the small subunit. These initiation factors are of different types in prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryotes, there are three types of initiation factors: IF1, IF2 and IF3. तीन तरीके के initiation factors होते हैं. जबकि when we talk about eukaryotes में there are more than 6 types of initiation factors. IF2, IF3, IF1, IF2, IF3, IF4, IF4A, B, C, IF5 and IF6. I repeat: IF1 initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3, initiation factor 4A, initiation factor 4B, initiation factor 4C, initiation factor 5 and initiation factor 6. So 5, 6, 7, 8. 8 type of initiation factors are present in case of eukaryotes. ठीक है, prokaryotes में सिर्फ 3. Okay. Then a large amount of energy is also required for this initiation to take place, and GTPs are used up. Guanine triphosphatase, उनमें से phosphate group को break करके energy is used for the process of initiation. Okay. इनिशिएशन में क्या होता है? mRNA के साथ स्मॉल सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के साथ देन द लार्ज सब यूनिट अटैचेस बाय द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन. फाइन. अब इसके बाद नेक्स्ट आया इलोंगेशन. और सॉरी, आफ्टर एसोसिएशन व्हाट हैपेंस? इनिशिएशन में पी साइट के ऊपर एक टीआरएनए आके अटैच कर जाएगा, ब्रिंगिंग मिथायोनिन, फॉर्माइल मिथायोनिन अलोंग विद इट. इतना हो गया इनिशिएशन. अब हुआ इलोंगेशन. इलोंगेशन में क्या होगा? ए साइट पर दूसरा चार्ज अमीनो एसिड लेकर के टीआरएनए आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा, एंड देन द राइबोसोम्स विल शिफ्ट बाय वन कोडॉन. सो ऑल दीज थिंग्स टेक्स प्लेस इन ड्यूरिंग इलोंगेशन. अब इलोंगेशन में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड
फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? अगेन ऑल केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो सम एंजाइम मस्ट बी रिस्पांसिबल कि दो अमीनो एसिड एक पी साइड पे था, एक ए साइड पर था, ठीक है, उनके बीच में, उनके अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा? इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम. ठीक है, it is an RNA enzyme. Remember, all enzymes are protein with the exception of some RNA enzyme. Sometimes even RNA can act as an enzyme, and this is peptidal transferase is the example of an RNA which is acting as an enzyme. Okay? So the peptidal transferase carries out the bond formation between the two amino acid, और ये present होता है large subunit. Large subunit में RNAs present है, rRNAs. One of those rRNAs act as peptidal transferase और वो peptide bond formation cause कर देते हैं. Okay? Then is next step, elongation में ही अगला step होगा translocation. What do you mean by translocation? What do you mean by translocation? अपनी लोकेशन से शिफ्ट हो जाना. आई जस्ट टोल्ड यू कि राइबोसोम एक कोडॉन शिफ्ट हो रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन. ओके, सो दिस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम बाय वन कोडॉन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. और इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं. एवरी स्टेज एंजाइम्स एंड factors are required, and the enzyme which is required for this movement of ribosome by one codon is known as translocase enzyme. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम और आरएनए का एक कोडॉन आगे शिफ्ट होने के लिए ट्रांसलोकेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड. ओके, देन इज after this the next is termination. Any problem in termination? Termination में release factors are required. Okay, and these release factors कब आएंगे, वहां पे अटैच करेंगे जब ए साइट पर कोई कोडॉन की बजाय नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन आ जाए. Then instead of tRNA coming and binding to the A side, these release factors they come and attach to the A side, and then everything dissociates. अब ये release factors कितने तरीके के हो सकते हैं? If we talk about eukaryotes में there are only one type of release factors which is known as RF1. Release factor 1 एक ही तरीके का release factor होता है. In prokaryotes we have two types of release factors, RF1 and RF2. दो तरीके के release factors are present in case of prokaryotes. Okay, अलग अलग क्यों होते हैं? यूकैरियोट्स में चाहे UGA हो चाहे UAA हो या यानी तीनों के केस में क्या होता है? UAA, UGA, UAG तीनों के केस में एक ही रिलीज फैक्टर आता है. बट प्रोकैरियोट्स में द रिलीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. If suppose in prokaryotes UAG and UAA is present, then release factor 1 will come and attach. और अगर UGA is present, then release factor 2 will come and attach. ठीक है, यूकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. दो अलग तरीके के रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग केस में आकर अटैच कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस modification we have already discussed post translational modification. So this modified protein now becomes active and go ahead and helps in the process of carries out the functions of the body. Okay, any doubts in this? Any doubts in this? Because then we'll start with regulation of gene expression. How the gene expression, gene कैसे express करेगा, कब express करेगा अपने आप को, ये चीजें ये कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में ये चीज कैसे कंट्रोल होती है. So before that, if you have any doubts in transcription and translation, please come up with your doubts. No doubts? How is that possible? It's not such an easy topic. Yes? Okay. Since you have no doubts, या फिर पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, I really don't know. I'll proceed with the regulation of gene expression. When we talk about gene expression, we have studied junior classes में आपने पढ़ा होगा कि there are two types of genes. First is the housekeeping gene and second is the constitutive gene. Housekeeping genes हम किनको कहते हैं? What are housekeeping genes? What are housekeeping genes? Housekeeping function. Restaurant, hotels में होता है ना housekeeping. उनका क्या काम होता है?
कंटिन्यूस काम होता है, रोज क्लीनिंग करना है, एवरी डे, दे डू नॉट स्टॉप देयर वर्क एवर, किसी भी दिन अपना काम नहीं रोकते हैं, दे आर वर्किंग every day without fail. So housekeeping genes are the genes which are controlling all the functions of the body which are continuously taking place. Okay, which are required continuously in the body. All these functions which are when the genes which control such function are known as the housekeeping genes. अब इसके बाद the other name for housekeeping gene is constitutive gene, और दूसरी genes होती हैं non constitutive gene. I was wrong here. Type of genes are non constitutive genes, जिनको हम luxury genes भी कह सकते हैं. So what do you mean by non constitutive or luxury genes? Yes, जिनको हम regulate कर सकें, जब चाहिए तब उनको स्विच ऑन कर दिया, जब नहीं चाहिए उनको स्विच ऑफ कर दिया. अगर हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कंट्रोल कर सकते, वो कंटिन्यूसली उनका एक्सप्रेस होना जरूरी है थ्रू आउट, then they are the housekeeping genes or the constitutive genes. If we switch on या switch off the genes, या हमारी body switches on या switches off the genes as per requirement, then such genes वो हमेशा नहीं एक्सप्रेस होते हैं, अंडर सर्टेन सिचुएशंस एक्सप्रेस होते हैं और फिर उनका एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है. दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन्स. अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है, इनका रेगुलेशन कैसे किया जाता है? अगर हम बात करें इन केस ऑफ control of these non-constitutive genes, operon concept. Operons यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं, operons सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं. And operons were first discovered in Escherichia coli bacteria. Escherichia coli में सबसे पहले operons को डिस्कवर किया था Jacob and Monod ने in 1961. So operons were first discovered by Jacob and Monod in 1961. और कई सारे तरीके की ओपरॉन्स क्लासेस इंडोर्स